Hello everyone, welcome back to my channel. This video is in continuation with the last video on mammary glands, part 2. So let's begin. So we have the blood supply. So breasts are supplied by arteries and veins. सबसे पहले arteries देख लेते हैं. Arteries में हमारे पास मेन है internal thoracic artery की branches. We have posterior intercostal artery की branches. And the branches of axillary artery, those are superior thoracic artery, thoracoacromial artery and lateral thoracic arteries. इतनी सी arterial supply है. Next is the venous drainage. So दो तरह की veins होती हैं, superficial veins and deep veins. The superficial veins of breasts, they drain into the internal thoracic vein and the superficial veins of lower part of the neck. नेक्स्ट आ जाती है लिम्फेटिक ड्रेनेज. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सर्जन के लिए बिकॉज मोस्टली द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इट स्प्रेड्स अलॉन्ग द लिम्फेटिक्स. सो लिम्फेटिक ड्रेनेज पता होना बहुत ज़रूरी होता है. सो मेजर जो हमारे लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं दोज आर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. वी हैव 4 मेजर ग्रुप्स. We have posterior axillary lymph node, anterior axillary, central axillary and the lateral axillary. Then we have internal mammary lymph nodes. We have apical lymph node and the supraclavicular lymph node. The lymphatic vessels, दो तरह की lymphatic vessels होती हैं, superficial lymphatic vessels and deep lymphatic vessels. Superficial lymphatic vessels, they drain the skin over the breasts but they do not drain nipple and areola. Please note this. And the deep lymphatic vessels, they drain the deeper part of the breasts along with nipple and areola. And one thing more that is important to note, that 75% of drainage it is done by the axillary lymph nodes, 20% by the internal mammary and 5% is by the posterior intercostal lymph nodes. So axillary lymph nodes, they are of maximum importance. जो हमारा lymph होता है वो axillary anterior और posterior group of lymph nodes से पहले central group तक जाएगा. उसके बाद from it passes to the apical lymph node जहाँ से finally it reaches up to supraclavicular lymph node. And below the areola we have plexus of lymphatics. It is known as plexus of Sappi. subareolar plexus of Sappi जो एरियोला के नीचे होता है वो थ्रू फोरामेन ऑफ लैंगर जो हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे, वो वहाँ से एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन करता है. दैट गोज फर्दर. Also the lymphatics from deeper parenchyma of the breasts, वो as we can see जो lymphatics यहाँ से होंगे वो हमारे क्रॉस करते हैं clavipectoral fascia. Clavipectoral fascia is a fibrous sheet present below the pectoralis major. वो हम आगे पढ़ेंगे. सो जो डीप लिम्फेटिक्स होते हैं वो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हुए जाते हैं एंड दे रीच अप टू दी एपिकल लिम्फ नोड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दी lymphatic drainage of mammary glands. It is very very important, so make sure you read it, go through it in the book. देख लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं उनकी एंटीरियर और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस इस रीजन में आती हैं. सो द ब्रेस्ट्स आर सप्लाइड बाय 4th to 6th इंटरकॉस्टल वेन्स. उनकी एंटीरियर और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस आएंगी. एंड एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है दैट नर्व्स जो होती हैं ये डू नॉट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ मिल्क. जो हमारी मिल्क सिक्रीशन है दैट इज़ मेजर, उसका जो कंट्रोल है दैट इज़ बाय हार्मोनल. ऑफ ब्रेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट हमने जैसे देखा कार्सिनोमा. सो कार्सिनोमा जो होता है हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट कहाँ होता है, अपर लैटरल क्वाड्रेंट में. और एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट द spread of cancer is more likely through the
lymphatics. सबसे पहले we will discuss about the superficial lymphatics. So the superficial lymphatics of one side of the breast is they communicate to the other side. So there is chance of spreading of cancer from one breast to the other. Also the lymphatics they are of the breast are in communication with the lymphatics of the abdomen, so their cancer may spread from breast to liver or to the pelvis. And जो कैंसर सेल्स होते हैं जो यहाँ के सस्पेंसरी लिगामेंट स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं वो उसको भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच द एंकरिंग इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट मेक्स द ब्रेस्ट फिक्स्ड. सो द कंट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट जो यहाँ से ये सस्पेंसरी लिगामेंट से अगर इनकी कंट्रैक्शन हो उसकी वजह से स्किन की रिट्रैक्शन भी हो सकती है. दैट इज़ नोन एज फोल्डिंग ऑफ द स्किन और पकरिंग ऑफ द स्किन. एंड द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट्स, जो दीज डक्ट्स दिस ऑल्सो लीड्स टू द रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल. अगर उनकी फाइब्रोसिस हो जाए तो दैट लीड्स टू द रिट्रैक्शन ऑफ द nipples. And one is powdery orange appearance. अगर superficial lymphatics हैं उनकी obstruction हो जाए तो they give rise to the edema of the skin, जिसकी वजह से जो skin है वो संतरे के पील की तरह लगने लग पड़ती है. that is known as powdery orange appearance. And also the carcinoma along with lymphatics, it may also spread along with the veins, because the veins of the breast they are in communication with the vertebral veins. So through the vertebral veins it can also spread to the central nervous system, to the brain and to the vertebra. One thing more, to detect the carcinoma we usually look for a mammogram जिसमें we can detect the cancerous mass. So that's all for today. Thank you very much. Bye bye.